Welcome back to my channel. In previous video I already discussed 59 questions of Maharashtra set exam paper number 2 English literature. Okay, in this video we will continue with the question number 60. We will discuss the answers, which is the exam of 7th April 2024. Now question number 60. Okay, let's start. Without further delay we will start now. Who among the following poets wrote the poem entitled The To Brooklyn Bridge? So it is a very famous poet that Hart Crane. To Brooklyn Bridge. It is written by Hart Crane. Option number A is correct. Question number 61. Mary Shelley's novel Frankenstein is an example of. So the Mary Shelley's novel Frankenstein इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गोथिक नॉवल. अगर आप बात करेंगे तो ये गोथिक नॉवल है, बट एक लेटर भी यहाँ पे लिखा जाता है. मतलब जैसे एपिस्टोलरी नॉवल में लेटर की रिसीव होना, लेटर पोस्ट करना, ये सब नहीं होता है इस नॉवल में. बट शुरू में जब दिखाया जाता है तो एक लेटर की रेफरेंस हमें मिलता है. तो लेट्स सी, बट द करेक्ट आंसर इज गोथिक नॉवल इज हियर. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 62. सर डेविड लैंडस्ले style of that their states is called. So it is an interlude. It is an interlude. Option number C is correct. Now the question number 63. Japanese film version of Macbeth done by Akira Kurosawa was titled as. So Japanese film version जो है Macbeth का by the Akira Kurosawa, तो ये है Throne of Blood. So the option number A is correct of question number 63. Now next question number 64. In the sentence, the man who won the Nobel Prize is an economics, the underlying linguistic unit is an. So probably the answer should be relative clause. But here there is a little bit confusion, relative clause or noun clause. But the correct option is option number noun clause. Okay, option number C is correct. Now the question number 65. Who said that the modern Western world is the grip of so-called discourse? So it is by the Foucault, Michel Foucault. Okay, so the option number B is correct here. Now the question number next. Oh no! That is question number. Here is a lengthy question which is not seen properly in this photo. Okay, still the answer C is correct of question number 66. If you have a question paper, watch it. That is national is an Western concept. Now the question number 67. Longinus on the sublime is written in. So the Longinus का जो sublime in on the sublime जो है वो जो लिखा है वो है epistolary form में लिखा है. So the C is correct option. The question number 68. Appeals to the Christian public is written by. It is written by Josh Marshall. Option number A is correct here. Okay. Now next question number 69. In which of the following novels does character of Lovelace appear? So the correct answer is option number B. क्लैरिसा में लवलेस ये कैरेक्टर अपीयर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लैरिसा, ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 70. James Synge is known for paganism in his much discussed play. So the much discussed play and the pathetic story of the Anne Ferlin, the mother of that the children, that is as like that there is a mother courage and other, as like that the Irish writer James Synge's famous discussed play is that the Riders to the Sea. Moray is a main character. Moray and her family how destroyed due to the that sea. Okay, so the correct option is option number A, the Riders to the Sea. Now the question number 71. Who attribute his novelistic negotiation of tradition and modernity to the double burden on the shoulder, the Alps of European tradition and Himalayan of all Indian past? So the correct option is option number C, Mulkraj Anand. Now the question number 73. That the touchstone method, very easy question, touchstone method, that is by the Matthew Arnold. Now the question number 73.
the Foucauldian understanding power is? What is the Foucauldian understanding of power? So the correct option is D, a negative instance whose function is repression. Okay. Now the 74 question ये cultural study से है. रिचर्ड हॉगार्ड इज एसोसिएटेड, देखो रेमंड विलियम्स और रिचर्ड हॉगार्ड जो है वो कल्चरल स्टडी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट, ओके, दीज आर द लाइन एंड दीज आर लाइन फ्रॉम द रेप ऑफ द लॉक, एंड ये कौन से कैंटो में आई है? तो कैंटो नंबर 5 में आई है. हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. ये जो लाइन है ब्यूटीज इन व्हेन देयर इज़ अ प्रिटी आइज मे फॉल, तो ये जो है ये कैंटो नंबर 5 में आई है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज नॉट द अर्ली इंग्लिश हिस्ट्री प्ले इन द, देखो लिटिल बिट कन्फ्यूजन क्वेश्चन, ऑल हम अर्ली प्ले देखेंगे बट कौन सा हिस्ट्री प्ले नहीं है? तो अर्ली हिस्ट्री प्ले, क्योंकि रैल्फ राइस्टर डॉस्टर एक अर्ली कॉमेडी है, तो ये हिस्ट्री प्ले नहीं है. सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नाउ द लुइस मॉन्टेग्यू essay शेपिंग द fantasies is a fine example of, that is the correct answer is new historicism. It is a fine example of new historicism. Now the next question, Jawaharlal Nehru's glimpse of that world history was written serially in the form of letter to. देखो जवाहरलाल नेहरू का फेमस वर्क है, उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए लिखा था, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हिज डॉटर इंदिरा. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर. Then caste hierarchy and gender hierarchy are the organizing principle of the Brahminical social order and are closely. देखो हम इस क्वेश्चन को हम कीनली पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर, क्योंकि इंटरसेक्शनैलिटी नहीं है, स्ट्रक्चर सेक्सुअलिटी नहीं है, ऑर्गेनाइज रिप्रोडक्शन नहीं है. सो द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्राह्मणिकल पेट्रार्की. सो द बी इज करेक्ट ऑप्शन. देन द PM नित्यानंद's नॉवेल लॉन्ग लॉन्ग डे इज, तो PM नित्यानंदा's नॉवेल लॉन्ग लॉन्ग डे क्या है? तो एक फेमस कैंपस नॉवल है. सो द डी इज करेक्ट हियर. देन हु इज़ द नरेटर इन ब्राउनिंग्स पोएम माई लास्ट डचेस? देखो माई लास्ट डचेस जो फेमस पोएम है ब्राउनिंग की, रॉबर्ट ब्राउनिंग की, तो उसमें जो नरेटर है वो है द ड्यूक ऑफ फेरारा. वो तारीफ करे अपनी वाइफ की, और हाउ आई स्टॉप द ऑल स्माइल टुगेदर वो बोलता है. सो लाइक दैट. Then the last question, 100 number, a woman is not born but made is said by. So it is said by Simone de Beauvoir. So the correct option is option number C. This is how the first 50 questions are in the earlier video, and remaining in this video. Keep watching. Thank you.